Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are safe and sound in your homes, washing your hands regularly, wearing mask whenever you all are stepping out of your homes. So children, let's begin with our circle time. How do we start? कैसे करते हैं हम लोग हमेशा circle time? We sing a good morning song. Ready? चलो, let's begin. Good, 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 good morning. Wake up to the brand new day. Good, 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 good morning. It's a beautiful day. Hello, sunshine. Very good. What do we do next? You always saying days of the week to find out what day is it today. So ready? Chalo. Remove your 7 fingers. Put your 7 fingers out. Ready? Chalo. Let's sing. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. One more time. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days of the week. 7 days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So children, think and tell me what day is it today? Yes, think. Yes, today is Thursday. So boys and girls, let's cheer for Thursday. Ready? Today is Thursday. Today is Thursday. All day long. All day long. Thursday, Thursday, Thursday. Thursday, Thursday, Thursday. Learning is fun. Learning is fun. Hello Thursday. Very good. So children, आज हम सर्कल टाइम में देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने वेजिटेबल्स लर्न किया, हम लोगों ने फ्रूट्स के बारे में पढ़ाई की, राइट? सो आज हम लोग देखेंगे वेयर डज दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो. दे ग्रो ऑन द प्लांट्स. तो चलो लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. देखिए, कैन यू सी दिस पिक्चर? यस. So see, this is called a plant. अब इसके जैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के भी देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. तो लेट्स सी. देखो, कैन यू सी दिस ग्रीन? यस, दीज आर कॉल्ड लीव. यस, दीज आर कॉल्ड लीव्स. ओके. नेक्स्ट, कैन यू सी दिस पार्ट? दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रूट. देखो, फ्रूट. और ये देखो एकदम छोटा सा ग्रोइंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ बड. बड. कैन यू सी दिस लॉन्ग स्टिक लाइक थिंग? देखो, यस, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेम. ये देखिए, दिस इज अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे होते हैं ये. दीज आर कॉल्ड रूट्स. रूट्स. और ये देखो, कैन यू सी दिस व्हाइट पार्ट ऑफ द प्लांट? दीज आर कॉल्ड फ्लावर्स. फ्लावर्स. चलो लेट अस सी वन मोर टाइम. लीफ, फ्रूट, फ्लावर, बड, स्टेम and roots. Yes? Okay? These are the parts of a plant. Did you notice this flower? Yes. So children, today in circle time, we are also going to see different types of flowers. Are you ready for it? Chalo, let's see अलग अलग type of flowers. See? Yes. देखो, which flower is this? This is called sunflower. Sunflower. Look here. Rose. Rose. This is called morning glory. Morning glory. Okay. Next we have lotus. See, ये हमारा national flower भी है. Lotus. What's next? Calendula. What flower is this? Calendula. Then we have jasmine. Yes, jasmine. Lily. Lily. Daffodil. See? Daffodil. So let's see the flowers on this page. Sunflower, rose,
morning glory, calendula, lotus, daffodil, lily and jasmine. Should we see few more flowers? Chalo. See, these are called lavender, lavender, hibiscus, hibiscus, poppy, poppy. These are called tulip, tulip, orchid, orchid, pansy, pansy. देखो इस पेज पे न्यू फ्लावर्स जो है लैवेंडर, हिबिस्कस, ट्यूलिप, पॉपी, ऑर्किड एंड पैंसी. यस, क्या ये बहुत ज्यादा कलरफुल फ्लावर्स थे? यस. सो इन सर्कल टाइम आज हम लोगों ने दो चीजें देखी. वी सॉ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ऑल्सो वी सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स. यस, प्लांट्स में क्या पार्ट्स देखे हमने? लीफ, fruit, flower, stem and roots. These are 5 main parts of a plant. Plant के सबसे 5 important plant parts हैं. Okay? All right. So that was all for circle time today. Are you ready for the writing work? चलो. So parents, for writing work, you will open the page जहाँ आज का date put किया है. यहाँ बच्चे 1 to 10, ओके, इस 1 below the other आप बच्चों से यहाँ लिखवाएंगे. यस, एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल राइट द मिसिंग नंबर. तो चलो लेट्स बिगिन फर्स्ट दिस पेज. यस, जब भी बच्चे लिख रहे हैं यू टेल देम टू से द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. You leave this line. 7, 8, 9 and 1, 0, 10. Yes. तो इस तरीके से आप ये वाला पेज कंप्लीट कराएंगे एंड देन विल ऑल्सो राइट द मिसिंग नंबर्स. यस, देखिए व्हाट कम्स आफ्टर 1. आपको पूछना है बच्चों से व्हाट कम्स आफ्टर 1. यस, या फिर आप 3 बता सकते हैं व्हाट कम्स बिफोर 3. तो यहां बच्चों का आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है. सो इट्स नंबर 2. व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 3 आप ये रेफरेंस के लिए भी रख सकते हैं. यस, वी हैव नंबर 4. व्हाट कम्स आफ्टर 5 वी हैव नंबर 6. Here we have 7. What comes after 7? We have number 8. What comes after 8? We have number 9. And at the end, देखो, it's already written 1, 0, 10. Yes? So you'll complete both the pages and you'll share the photo in the school group. And now children, it's time for rhyme. So children, we have just completed our writing work and now it's time for rhyme. Are you ready for it? Today we will sing a rhyme on flowers. Yes, are you ready? Yes, we will sing a rhyme on flowers. 1, 2, 3 and let's begin. Roses are red, yellow and pink. The lotus in the pond does not sing. Yellow sunflowers face the sun. Flowers are liked by everyone. Colorful tulip is so bright. Sweet smelling jasmine is completely white. In many, many colors, hibiscus is found. With petals wide open, it looks big and round. Yes, so this was the rhyme for flowers. Should we sing it one more time? Chalo, let's begin. Roses are red, yellow and pink. The lotus in the pond does not sing. Yellow sunflowers face the sun. Flowers are liked by everyone. Colorful tulip is so bright. Sweet smelling jasmine is completely white. In many, many colors hibiscus is found.
With petals wide open, it looks big and round. Yes? So देखो हम लोगों ने पोएम में कौन से फ्लावर्स के बारे में बात किया है. We have spoken about rose, lotus, sunflower, tulip, hibiscus and jasmine. Okay? So children, you will revise your concepts. Yes, you will learn all the flower names. You'll complete the writing work and share the photograph in the school group, and you'll learn this rhyme. Okay? So I'll see you next week. Till then, bye bye.